Hello friends, welcome to the channel. Today we are going to do CUET UG previous year question paper of 2022. 15 questions we have already done, and in this video also we will go for the next 15 question. So question number 16 to 30 we are going to cover in this video. This is the video of general studies. I told you about the pattern in the previous video as well. There will be section A, section B, section 2 and section 3. Total 50 number of questions in section A and B, that is language 1, and 50 questions in domain specific. General test of 75 questions, 40 you are supposed to attempt here, 40 here and 60 from this part. 45 minutes for language will be given, 45 minutes for subject, domain subject will be given, and 60 minutes for general test will be given. This is the syllabus of general studies. We will cover 2 previous year question papers and we will try to cover mini sample papers as well, so that in the coming 2 months you are able to prepare yourself. So please keep watching the channel and do not forget to share and subscribe. 16th question. A father said to his child, I was as old as you are at the time of your birth. If the father's age is 48 years now, the child's age 6 years back was what? 15, 16, 17 or 18. At present, the age of the child, let us consider X, and the father was of the age X when the child was born. Because he is saying, I was as old as you are at the time of your birth. And the father's age is 48 years now. So we can say 2x is equal to 48 years, or x plus x is equal to 48 years. So x's value is 24. The child was born when the father was 24 years of age, and at present the father is 48 and the child is 24. So this much is solved, but we are being asked if the father's age is 48 years now, the child's age 6 years back was what? So just subtract 6 from 24, that is 18 years. So correct answer is 18 years, option D. Next question. A town has population of 20,000 in 1980. In 1 year, that is by 1981, it increased by 25%. Next year, that is in 1982, it decreased by 20%. The next year, in 1983, there was an increase of 30%. What is the population at the end of 1983? So here you need to go step by step. The first one, 20,000 is given to you. 20,000, if you will go for the increase of 25%. So that is the 125% of 20,000. It will give us the answer 25,000. So it became 25,000 next year. Then there was a decrease of what? Decrease of 20%. That means population will become 80%. Then we will reach to 80% of 25,000. This one. It will give us the answer 20,000. Now again, population increased 30%. So 20,000 में 30% का increase, 20,000 into 130 upon 100, that is an increase of 30%. It will give us the answer 26,000. You can take time to do your calculation, and if you are also reaching to this option, option C, your answer is correct. And this is the question related to the speed of current, speed of the person or boat and the still water. इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको एक बेसिक वीडियो देखना होगा. I'll provide the link of that video in the description, and you can first make your basics concrete and then you should go for this kind of questions. Most probably there will be at least one question related to this topic. So a man can row at the speed of 6 km in still water. The water is still and its speed is 6 km. If the velocity of the current is 2 km per hour, so while
Going in the direction of the water, its speed will be 8 kilometer, and while going in the opposite direction of the water, the speed will be 4 kilometer, right? 6 plus 2 and 6 minus 2. This much is clear. And total time taken is 3 hours. We know that time is equal to distance upon speed. Let us assume the distance to be x. Distance ही हमें नहीं दिया गया है, distance to be x. So the distance time is equal to distance upon speed. So time, total time while coming back plus while going to a particular place will be the sum of the times taken each time. First time it will be x upon 8 while going against the direction of the water, and while going in the direction of the water it will be x upon 4, right? Time, distance upon speed. Distance we do not know, it is x upon 8 one time and x upon 4 the second time. 4 और 8 तक हम कैसे पहुंचे, that I have told here. 6 kilometer was the speed in still water, and the speed of the current is 2 kilometer. If you are going in the direction of the water, आपकी speed अपने आप 2 kilometer बढ़ जाएगी. If you are going against the speed of the water, आपकी speed कम हो जाएगी. So x upon 8 plus x upon 4, that is the time taken each time, once while going, once while being back. This equal to 3, because this 3 hours it is given. So if you will solve this particular equation, you will get that x will give us the value 8. So 8 here, option A is the correct answer. Next question related to profit and loss. For profit and loss also there is a basic video which you are supposed to watch to make your concepts concrete. A car is sold for 85,000 at a loss of 20%. What is the cost price of the car? ऐसा क्या प्राइस था जिसको डिक्रीज करके, जिसको 20% डिक्रीज करके it becomes 85,000. So if somebody gets decreased by 20%, what does it become? 80%. And originally what it was 100. So that will be the ratio of the selling price and the cost price. And selling price at present we know that is equal to 85,000, and cost price we do not know. Let us keep it x. अब आप इस equation को solve करेंगे, so you will reach to the answer 106,250. Correct answer is 106,250, option D. We are solving 2022 CUET general test question paper. Next question. If I sell a cycle at rupees 3600, I make a profit of 20%. At what price I need to sell to make a profit of 10%? पहले वाले क्वेश्चन की थोड़ी सी हेल्प लेंगे. 3600 पर सेल करके मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ. 20% का प्रॉफिट अगर हुआ तो 120 हो गया टोटल अपॉन 100. दिस विल बी द रेशियो 3600 अपॉन x. ये x मुझे नहीं पता. So now the value of x, if you will solve it, x will give you the value 3000. Right, the cost of the cycle was actually 3000 and I sold it at 3600 and made a profit of 20%. At what price I was supposed to sell it to make a profit of 10%? What is the 10% of 3000? बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जिसे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती. इट इज सिंपली विजिबल. 3000 का 10% is 300. 300 को 3000 में ऐड करेंगे तो 3300. बहुत बार अगर आपको आंसर बिल्कुल डायरेक्टली और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दिख जाए तो डू नॉट use any time, utilize any time in solving it. Directly click the answer. The answer here is 3300. तो पेन और पेपर का यूज अगर नहीं करना पड़े तो मत करिए, because that will be time taking. Otherwise, if you are unsure for any XYZ reason, make sure to go for it. Next question. A, B and C are in a cycle race of 1500 meters. A cycles twice as fast as B, C cycles half as fast as B, and C completes the race in 40 minutes. Then
Where was B from the finishing line when A finished the race? So here we will have to assume, let us take speed of C to be x meters है तो we will take it meter per second, x meter per second, and speed of B is double, so it will be 2x meter per second, and speed of A will be 4 4x meter per second. This much is clear. Please have a look carefully. This is C, x, this is B, 2x, and this is A, 4x. If you are not understanding this one, let us have a look at the question once more. A cycles twice as fast as B. Yes. So A is 4x, B is 2x, and C cycles half as fast as B. B is 2x, C half हो गया 2x का. Okay. So C completes the race in 40 minutes. अब इसके बाद का सिनेरियो कवर करते हैं हम. तो इस हिसाब से C की स्पीड है x मीटर्स पर सेकेंड और A की स्पीड है 4x मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि A is 4 times faster than C. Now we are given C completes the race in 40 minutes और A की स्पीड अगर C की स्पीड की 4 times है तो A ने अपनी रेस खत्म की 10 मिनट्स में. 10 minutes is equal to 600 seconds. Hence speed of A कितनी हुई? Speed is equal to distance upon time. डिस्टेंस हमारा कितना है 1500 और टाइम लगा 600 सेकेंड्स. 1500 divided by 600 seconds. So speed of A is equal to 2.5 meters per second. इतना आप लोग याद रखिए और अच्छे से देखिए. Then we will move to the next step. Speed of A अभी तक हमने निकाला है. Speed of A is equal to 2.5 meters per second. लेकिन हमें निकालना क्या है? Where was B from the finishing line when A finished the race? A ने रेस फिनिश करते हुए अपनी स्पीड क्या रखी? 2.5 meters per second. Now we need to reach to the speed of B. हमारे पास A की स्पीड आ गई 2.5 meters per second. Here, look here. A cycles as twice as fast as B. A की स्पीड अगर B की ट्वाइस है तो B की स्पीड क्या हुई? इसकी भी हाफ, यानी कि 1.25 meters per second. धीरे धीरे हम B की स्पीड तक पहुंच गए इस क्वेश्चन में. 1.25 meters per second is the speed of B. So required distance अब हमारा कितना रहेगा? 1.25 into 600, that is 750 meter. 750 meter का distance is covered by B. Option D is the right answer here. अगर आप लोग कंफ्यूज हैं कि 1.25 को हमने 600 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो लेट मी एक्सप्लेन. 1.25 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ बी, दैट यू नो. और 600 सेकेंड्स में ए ने अपनी रेस को कंप्लीट किया था. और क्वेश्चन इज वेयर वाज बी फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन व्हेन ए फिनिश्ड द रेस. So it is 1.25 into 600, that is 750 meter. टोटल 1500 मीटर की तो हमारी रेस है. अगर B ने डिस्टेंस कवर किया 750 मीटर्स का, so 750 meters B was away from the finishing line too. This question is quite simple, doesn't even need calculation. Mohan asked 36 men to build the house in 30 days. 30 दिन उनको काम करना था 36 वर्कर्स को. 50% of the work got completed in just 10 days. अब 50% वर्क कंप्लीट ही हो गया 10 days में, तो बचा कितना? हाफ वर्क डन एंड हाफ वर्क इज स्टिल लेफ्ट. सो मोहन रिमूव्ड सम वर्कर्स. मोहन ने कुछ वर्कर्स को अब काम से हटा दिया. हाउ मेनी पर्सन्स डज ही नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन डिसाइडेड टाइम? अब रिमेनिंग वर्क उनको 20 days में कंप्लीट करवाना है. Okay. अगर 36 वर्कर्स 10 days में हाफ काम कर देते हैं, तो अगर वर्कर्स को हाफ कर दिया जाए तो 20 days लगेंगे. Okay. So 36 workers can complete the work in 10 days. अब 20 days में टोटल 20 days में, यानी कि सिर्फ 10 days में वर्क कंप्लीट करवाना है बचा हुआ, तो only 18 laborers are needed. It is like
m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2. आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. 36 into 10, this was m1 into d1, that should be equal to always m2 into d2. अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, x into 20. कुछ मजदूर हटानी है हमें. सो x अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैसे भी 18 आएगा, लेकिन अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से सोचें तब भी 36 लेबर्स अगर 10 डेज में काम कर देते हैं तो अगर सिर्फ 18 लेबर्स रह जाएंगे तो वो बचे हुए 20 डेज में काम कर देंगे कंप्लीट. सो 18 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वर्किंग टाइम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी एंड आई विल प्रोवाइड यू अ वीडियो ऑफ वर्किंग टाइम इन डिस्क्रिप्शन. वर्क इन टाइम के कॉन्सेप्ट्स को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए. एक क्वेश्चन जरूर आएगा. द क्वेश्चन हियर सेज पी कैन डू द वर्क a piece of work in 5 days, Q alone in 4 days. P and Q undertook to do it for rupees 3000. ये थोड़ा सा सेकेंडरी फैक्ट है, हम बाद में इसको कवर करेंगे. But concentrate here, with the help of R they completed the work in 2 days. तो इन सब की वर्क कैपेसिटी क्या रही, अलग अलग हमें वो निकालना है और उस कैपेसिटी के हिसाब से टोटल 3000 में से how much should be paid to R? That is the real question. P can do the work in 5 days, Q can do the work in 4 days, and R can do the work in suppose R days. So let us make this equation. 1/5 work is done by P, 1/4 work is done by Q, and 1/R work done is done by R. And 2 दिन में काम पूरा करते हैं तो 1 दिन की एफिशिएंसी उनकी हो गई 1/2. इसको इक्वेशन लेकर अगर हम सॉल्व कर ले 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 माइनस इसको इधर ले आते हैं -1/2 इज इक्वल टू -1/R. इस तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -1/20 इज इक्वल टू -1/R ये हमें मिल जाएगा. तो R की कैपेसिटी हुई 20 डेज. R 20 डेज में काम को खत्म करता है, P 5 डेज में और Q 4 डेज में. इस हिसाब से अगर हम 5, 4, 20 इन एफिशिएंसीज का अगर रेशियो निकालें तो रेशियो क्या आएगा, 20 इनका एलसीएम हो जाएगा. 20 डिवाइडेड बाय 5, 4 रेशियो है इसकी P की, and 5 ratio is 5 is the capacity of Q and 1 is the capacity of R. 4, 5, 1 ये इनकी रिस्पेक्टिव कैपेसिटी है. इस कैपेसिटी के हिसाब से हमें 3000 रुपीज को डिवाइड करना है. तो 3000 को अगर हम कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड करेंगे 4:5:1 तो R के हिस्से में आएगा 1/10 मनी. 4 + 5 + 1 टोटल 10 का शेयर बनता है और उनकी कैपेसिटी 10 में से सिर्फ 1 की है तो ही विल गेट ओनली 3000 into 1/10. This much amount, that is 300. Next question. A tire has 2 punctures. First puncture alone would have made the tire flat in 6 minutes. तो फर्स्ट पंक्चर की कैपेसिटी क्या हुई 1/6 एंड सेकेंड पंक्चर 1/9 मिनट. सेकेंड पंक्चर की कैपेसिटी हुई 1/9. तो अगर दोनों होल्स में से हवा कांस्टेंट लीक होती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ द पंक्चर्स टू मेक इट फ्लैट? इट विल हैव द इक्वेशन 1/1/6 प्लस 1/9. This will give us the equation 18/5 और अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो it will give us the answer 3/5. This is the right answer, option A. Next question. If the length of the diagonal of a square is 7√2, this is the diagonal. Diagonal की length है 7√2 meter. The area of the square. Now we have to find out the area of the square. Length of the diagonal 7√2. So length of the sides will be 7 meter. And if length of the side is 7 meter, then the area will be side into side, that is 7 square is equal to 49 meter square. Next question. If A/B is equal to 2/5, then the value of 2A plus 3B ratio A plus B is equal to what?
Let us solve it. A ratio B is equal to 2 ratio 5. So 2A plus 3B will be equal to 2 into 2 plus 3 into 5. That is equal to 19. And A plus B will be equal to 7. So 19 ratio 7 will be our answer. Option B is the right answer. Find the greatest number that will divide 38, 88 and 163 so as to leave the same remainder in each case. I'll give you a shortcut for this one. Required number is equal to HCF of the difference of the given number. जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन होता है, find the greatest number that will divide 38, 88 and 163 so as to leave the same remainder. तो हमें क्या करना होता है, रिक्वायर्ड नंबर, हमारा जो भी रिक्वायर्ड आंसर होता है, यू कैन से इज इक्वल टू HCF ऑफ द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर. इन तीनों नंबर्स का आपस में डिफरेंस, 38 और 88 का डिफरेंस, 88 और 163 का डिफरेंस, 163 और 38 का डिफरेंस. लेट अस अंडरस्टैंड 38 और 88 का डिफरेंस सबसे पहले हम करेंगे, देन वी कैन डू द डिफरेंस ऑफ 163 एंड 88. सबका आपस में एक एक पेयर का डिफरेंस कर लेंगे एंड 163 एंड 38 इनका भी डिफरेंस हो जाएगा. सो तीनों पेयर्स का आपस में डिफरेंस हो गया 38, 88, 163, 88, 163, 38. ये नंबर्स हमारे आएंगे 50, 163 और 88 का डिफरेंस हमारा आएगा 75 एंड 163 और 38 का हमारा डिफरेंस आएगा 125. 50, 75, 125. Now you can easily see what is the highest common factor of 50, 75 and 125. What is the highest number जिससे ये तीनों numbers divide हो सकते हैं without leaving any remainder. The answer is 25. नेक्स्ट क्वेश्चन में से कुछ कॉम्बिनेशन आंसर ढूंढना है हमें. प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी, रेट इज इक्वल टू आर, टी इज इक्वल टू टाइम, एस आई इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट. देन विच ऑफ द फॉर्मूलाज आर राइट. सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी इज क्वाइट करेक्ट. सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक फॉर्मूला है इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. आप लोगों ने स्कूल्स में इस फॉर्मूला को बहुत किया होगा. अब इसके हिसाब से देखिए और कौन कौन से लीनियर फॉर्मूलाज सही फिट बैठते हैं. एंड इफ यू विल सी प्रॉपरली ए, बी एंड ई ये बिल्कुल ठीक फिट बैठते हैं. अगर हम मिक्स एंड मैच करके फॉर्मूलाज को देखें, फॉर्मूलाज बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं ए, बी और ई इन तीन ऑप्शंस में. Next question. Two numbers are in ratio 4:3. If 2 is added to each of the number, the new ratio becomes 5:4. Find the new numbers. दो numbers हैं 4:3 में, यानी कि हम मान लेते हैं 4x और 3x है. And further the question says, अगर दोनों में 2 ऐड किया जाए तो ratio becomes 5/4. We can say 4x upon 3x. इन दोनों में हम 2 ऐड कर देते हैं, +2 इज इक्वल टू 5/4. इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव अस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इट विल गिव अस 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 15x प्लस 10 एंड दैट विल गिव अस द आंसर x इज इक्वल टू 2. x अगर इज इक्वल टू 2 है तो नंबर्स आर 8 एंड 6. ऑप्शन सी हियर इज द right answer. Now we are to find the average of first 99 positive integers. I know all of you know how to calculate average. Average is the sum of the total numbers divided by the number of the integers. लेकिन यहाँ पर first 99 है, 1 से लेकर 99. Will you be doing the sum of all the numbers? That is too much time taking. इसके लिए फॉर्मूला है लास्ट नंबर 99 into 99 plus 1. 99 का एक नेक्स्ट नंबर यू कैन से डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द सम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम. अब आपके पास सम आ जाएगा 4950.
सम आ गया आपके पास 1 से लेकर 99 तक के इंटीजर्स का। अब आप एवरेज कैसे निकालेंगे? 99 से डिवाइड कर दीजिए। 4950 divided by 99 will give you 50. 50 is the correct answer for this one. Will you like to try the same formula and see how does it get justifies? कुछ छोटे numbers ले लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. Simple. अब देखिए इनका एवरेज, इनका मिडिल नंबर ही होगा ऑप्शन 3. नंबर 3 इज द एवरेज. इसी को ट्राई करते हैं. सबसे लास्ट डिजिट 5, फिर उसका नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय 2 करना है. वी विल गेट द सम दैट इज 15. आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15. इतना सम हमें करने की जरूरत नहीं है. अप्लाई दिस फॉर्मूला. ये तो 5 ही नंबर से शुरू किए तो इट इज इजी, लेकिन आपको कुछ डिफरेंट नंबर्स भी आ सकते हैं. So at that place you need to apply the formula. 15 है, 15 को आप total 1 2 3 4 5 से divide करिए and you will get the answer 3. Hence it is tested as well. So we reached to question number 30 of 2022 general test, question paper 1. We will be doing this paper as well as one more paper of the other shift, and we will try to do few sample papers also, so that you are properly prepared for the general test of CUET UG upcoming examination. And please do not forget to share and subscribe the channel.